I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me Hello Anil bhai, welcome to Discus Ninja. Hello Vineel, how are you? I'm fine. बहुत जन का सजेशन था, rather request कि we should take an interview with Anil bhai with respect to your experience and knowledge, vast knowledge you have. And Niranjan is too shy to interview, so he requested me, and he wanted this to be in English. So please pardon if I make some grammar mistakes or English mistakes. No, but then we will do it in multi-language. Yeah, probably. Yeah. I believe we've got viewers from all the sectors. So let's do it in the English. Yeah, sure. So let's start. My first question is a little personal. So when you started with Discus, so how was your journey? Like, how did you come to know about the quality of Discus, and how your knowledge developed with respect to how to how to select the Discus, and what is a poor Discus and a good Discus? Because it's been a long, like 20-25 years. I guess so. That's when Carrie Sir started breeding, and तभी ऐसा था कि maybe I was very fortunate or very lucky to get my first Discus from the best. Okay. Probably he was best then. Even if he starts today, he's the best, and his solutions are very simple. So I feel that if in India if there is somebody whom I can truly call a legend, I can count them on my fingertips. One is Carrie Sir for sure. And yes, मैंने मेरा डिस्कस उन्हीं से सबसे पहले चालू किया था. Okay. तो सिलेक्शन तो डिस्कस का कैरी सर ने करके दिया था, बट उसमें पता चला कि अगर मेरा एक ना पर्सनल एक क्वालिटी, आई डोंट नो अच्छी क्वालिटी की खराब क्वालिटी, आई एम वेरी ऑब्जर्वर. अगर कोई कुछ करता है तो आई वुड लाइक टू, आई मीन इफ दैट सब्जेक्ट इंटरेस्ट में, तो मैं उसमें घुस जाऊंगा. मतलब आई विल कीप वाचिंग इट. आई एम वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर. मैं ऑब्जर्व करता रहूंगा एंड आई पिक अप सम पॉइंट्स. तो अब जब कैरी सर सेलेक्ट कर रहे थे इन अ टैंक ऑफ लाइक यू नो, उनकी मे बी अराउंड 3.5-4 फीट की टैंक होगी, उसमें अराउंड 50 बेबीज थे, बच्चे थे. ऑफ कोर्स मे बी अराउंड 2.5 इंच के साइज के. मैंने 2 ब्लूज लिए थे, 2 उनके सनशाइन येलो लिया था. अब तो लाइक एक हॉबीज जैसा सेलेक्ट किया. हाँ, हॉबीज जैसा नहीं, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने निकाल के दिया था. एंड he was even at that time he was very restrictive of who enters the house to see the discus, and you know, it was not like anybody can walk in, because discus was sensitive to airborne and waterborne disease. Is still sensitive. तो तभी उन्होंने जब सेलेक्ट किया तो I could understand कि okay boss, discus is meant to be round. Basic understanding, discus is meant to be round. छोटे साइज में दिखता नहीं है, लेकिन छोटे साइज में उनको तो अंदाजा है, उनका तो एक्सपीरियंस था कि बस अगर एक मच्छी का फेस थोड़ा लंबा हो गया तो वो सिवराम बन सकता है या डिस्कस नहीं बन सकता. तो वो एक चीज, और मैं प्रोबिंग भी करता हूँ, तो मैं वो एक चीज उनसे सीखा. और वो फिश लेके आके ऑब्वियसली लाइक एनी अदर हॉबीज मेरे कम्युनिटी टैंक में डाला, जिसमें गोल्ड फिश भी था, एंजल भी था, सिल्वर डॉलर्स थे, सिल्वर शार्क, like we all did when yeah, we first तो started with Discus.
मतलब एक मेरे पास 4 फीट का टैंक, हाँ 4 फीट का टैंक था, उसमें कम से कम 25-30 मच्छी थे, ड्रिफ्ट फ्रूट भी था और सब कुछ था, तो एकदम एकदम मतलब कोला वाला, यू नो, वेरी अपकमिंग हॉबीज था. Fishes have always been my passion. So of course in my early days I couldn't afford, but then God has his own ways to provide. तो जो मानसून वाटर्स के ड्रेन्स में जो गप्पीज होते थे या टैडपोल जो भी होते थे, वहां से पकड़ के लेके आओ. हमारे इधर पहले तो बॉम्बे में बहुत सारे मैनग्रोव्स थे. मैनग्रोव जब फुल होते थे तभी वो टैडपोल्स आते हैं, टैडपोल्स आते हैं, और तिलापिया जैसे कुछ मच्छी आते थे. आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट देन उसको भी हमने फिश किया, उसको भी रखा. आई लर्न कैचिंग फिश इन दी वेल आल्सो. और फिर ऐसे बहुत कुछ किया. मतलब ऑब्वियसली हर एक फिश हॉबीज ने तो वो सब किया होगा, तो वहां से चालू हुआ. सो आपका डिस्कस आपको याद है कभी आपने स्टार्ट किया, इन विच ईयर? लाइक नहीं, I don't remember. Of course, Carrie sir would be able to tell that when he had bred that blue and the yellow. Of course, he's got a very good memory. So it's been a couple of decades, I would say. Okay, so 20 years plus. हाँ, मैं बोल सकता हूँ. जितना बहुत सारे अभी यंग हॉबिस्ट का एज भी नहीं रहेगा. So coming back to discuss, आपका जो कैरी सर से आपने चालू किया, बट आपने इम्पोर्ट में कभी आप एंटर किया? When was your first time you imported discus and how? That's a very tricky question. Probably what I would say is that मैं imported discus रखने चालू किया. Of course, when I was a hobbyist तभी किया. तो certain things that I cannot go on social media and say, बस हाँ कहीं से सोर्स किया हमने डिस्कस. Okay. So तभी वहाँ पे मेट्रो के पास एक टोनी एंड the brothers, the brothers were there. They used to keep discuss and used to go to a store and stand outside and see, because कभी भी हिम्मत नहीं होती थी. तो वो उन्होंने कहीं से लेके आया था डिस्कस. Okay. तो जब तक मैं कैरी सर से लेता था तब तक तो मेरे को इम्पोर्टेड की जरूरत नहीं थी. बट देन फिर वो हॉबी बढ़ता गया, तो देन रखना है डिस्कस. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पीपल इन इंडिया, स्पेशली इन मुंबई. तो वेरी फ्यू थे, एंड आई अप्रोच सम फार्म एंड वहां से डिस्कस लिया. फिर बाद में, बट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड विद व्हाट आई स्टार्टेड विद कैरी. ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years there was a lot of dilution. अभी आपको भी पता रहेगा कि आपका भी क्रेज वैसे आएगा कि आपने डिस्कस लेके आया, but you did not get it with the intention of breeding. Correct. But बॉम्बे का पानी और वो इतना फेवरेबल है, गॉड गिफ्ट है कि हम लेके आके रखें, नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो ब्रीड हो जाते हैं, और वो कम्युनिटी टैंक में ब्रीड हो जाते हैं. करेक्ट. सो ऐसे चलते चलते मेरे ख्याल से a lot of people, lot of hobbyists actually took this as a part time profession. के 9 to 5 we'll do our job, say 6 o'clock come home, 6:30 come home, feed the discus. They started breeding और वो कर. My journey started the same way only. Yeah, so I feel everybody did that. Now for me, I did have some breeding in my tanks, but I was never into that breeding game, because what I understood from Carrie sir is that you need to dedicate time, and man being a social animal, me being a more social animal, I wanted to keep myself free. So वो breeding का कभी मुझे इंटरेस्ट हुआ नहीं, ना होगा. अच्छा, हमको अपॉर्चुनिटी मिला उसकी वजह से? नहीं, ऑफ कोर्स. अभी जैसे विनील, अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, ये जो लास्ट ईयर हमने जो कंपटीशन किया था, तो इट वाज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोजर ऑफ एक्चुअल टैलेंट. या करेक्ट. ठीक है, हम हमारे मतलब जैसे ना कुएं के मेंढक हैं. एग्जैक्टली. तो वो एक कंपटीशन से हमको ना काफी ये मिला, क्योंकि क्या है कि एक तो ऐसा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप रहते हैं जो तुम्हारे मच्छियां प्रेस करते हैं, बट जो तुम्हारे नॉट सो फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारे क्रिटिसाइज करेंगे. सो वी हैड समबडी न्यूट्रल कम एंड से दैट इंडिया हैज गॉट पोटेंशियल. करेक्ट. दैट इज वेयर everything started for me. What I'm doing currently, everything started for me from there. But yeah, imported quality was always better. Malaysia was always called the mecca of discus. It is still on that platform. They produce the best of discus there so far. Of course, I would not say that they are the only ones who are producing good discus. India has got one of the best. Malaysia. India has got fantastic potential. And I have seen a lot of breeders, or small time breeders, big farm owners having very fantastic discus.
And how far is India from achieving that Malaysian quality or Malaysian standard? What do you think? कि what is a like एक टाइमलाइन है ना, अपन थोड़ा पीछे है मलेशिया से, लेकिन कितना पीछे है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ आपके हिसाब से? एक जनरल क्वेश्चन है, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बताओ. हम मलेशिया से टैलेंट में थोड़े पीछे हैं, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट में बहुत पीछे हैं, एंड आई डोंट नो हाउ आई पुट इट, बट ह्यूमन नेचर में तो बहुत दूर है. करेक्ट. इफ ह्यूमन बिहेवियर की बात करें या ह्यूमन नेचर की बात वी आर करें, टू डिवाइडेड, यू थिंक? वी आर इन दैट crab race. Yeah. I will pull you down, but I will not go on top. Unfortunately, that's the scenario here. Vineel, you would also agree that if one guy or one person is doing good, rather than we supporting, making syndicate, making forums, making consortiums, and together going ahead, we'll try and make consortiums to pull him down. Correct. So that's unfortunately it's all across the globe. It's not only that Indians do it, हर कोई करता है. But ये पिक्चर शायद मलेशिया में लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन कोलैबोरेशन. डेफिनेटली अपन हम लोग भी कुछ करेंगे ऐसा. विल आल्सो डू. यस, डेफिनेटली इनिशिएटिव है, डिस्कस क्लब ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, सो विल सून वर्क ऑन दैट एज वेल. एंड रिसेंटली यू हैड बीन टू इंडोनेशिया, एंड आप फाउंडिंग मेंबर है DCA के, डिस्कस क्लब ऑफ no, it's the World Discus. वर्ल्ड. ओके, WDA का. सो आप कैसे वो फाउंडर मेंबर बने, एंड अभी वो WDA का एजेंडा क्या है? WDA is basically World Discus Association. So ये काफी साल से इनका मतलब ऐसे कुछ चलता है. जब भी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, judges come together and breeders come together and they say that we should regulate all over the world. Yeah, it should be globally universal for all. Globally universal एक ही बात होती है. It should be universal for all. So in case if somebody is holding an international competition, of course, if it is a local competition, it is limited to a certain area or a region. But when you're doing an international competition, you are expecting international participants to come. You are expecting importers to come. You are expecting breeders to come. You are expecting hobbies to come. But what happens is that there is always a disconnect, or there is always a feeling that, you know, it's being biased, or you know, the categories are not well explained, or probably the game is not well explained. You know, the participation is not well explained. तो ये सब रेगुलेट करने के लिए a lot of people like Jeffrey हुआ, Jeffrey Tan हुए, और Joe Birol है, and a lot of them, Ricky Lim हुए, and many across yeah, many names. Half of them I cannot pronounce also, but then there are many names who are trying to do it. Okay. But when we did the Discus Showtime 2022, we reached, knowingly unknowingly, we reached a lot of countries where they did not know India is into discus. And so वो कंपटीशन की वजह से इंडिया को एक कंपटीशन की वजह से इंडिया को रिकॉग्नाइज करने चालू किए. And then they started approaching who are the main participants or who took the initiative and all. So Lutz and myself, we did it, and of course Lutz के busy schedule के हिसाब से he couldn't join me for the Indonesian, because Discus Club of India is right now, it is secured, the name is secured, the logo and everything is secured. I mean, it's all patent. We formed the Discus Club of India, and since, you know, there are some what do you say, formation का थोड़ा सा issue है. I mean, there's no clarity on how an association would be formed, which would be a non-profit organization. So as of now, we have given it a proprietorship status, and yes, the working of the Discus Club of India would be exactly like a association only. हम next वाले competition की तरफ तो जा रहे हैं. Of course, for some uncertain reasons, we couldn't conduct it in June, but we are targeting in the first week of September. Probably come June, and we would announce the details of it. So this is what Discus Club of India. Now, being a member of the Discus Club of India and being a active member of Discus Club of India, I was approached to actually
redefine the module that they have been working on, the do's and don'ts of the World Discus Association. And probably we've got the gift of the gab, and our English is quite neutral and standard across, because across the globe some are French, some are from Italy, some are from Turkey, some are from Malaysia, Indonesia. So there is a language barrier, but then ours is the most neutral English, and then that gave me an opportunity to what do you say? क्या बोलते हैं उसको, मतलब present your ideas in a more simplified manner, so that everybody understands, everybody agrees on that. And to actually take it forward, we personally thought that we should personally meet all those people who are interested and who are of the same thought process, that there should be an association, regulatory body which would regulate all these things, and probably have courses for the judging, the basic discus keeping, the basic discus breeding, the basic treatments and diagnosis of illness for discus. So there are a lot of people who have like dedicated their lives, and they are all coming together. They are all coming together, and this is the initiative of the World Discus Association. Okay. So of course अभी सिंगापुर में जो competition होने वाला है, yes, we are planning for some of the course to happen there, because Singapore Discus Club of Singapore has come forward, or probably proposed that they could give us the venue for this kind of meet. So let's see how it happens. If I'm not personally able to go there, we'll so go. You are the link, you are the connect which will get World Discus Association and Discus Club of India together, or maybe similar kind of platform. So what I aim at is getting India at a par level with any other international country who does the discus trade. Correct. So since we have the potential, we are growing discus. Our consumption of discus is as good as any other country, I would say. World's biggest population. We are a potential very good market. We have the best talent across the globe. I could boast, and I could say that we've got the best talent, be it whatever. So जब ये है हमारे पास, तो हम why should we restrict ourselves to only our boundaries? Why not grow beyond the boundaries? And of course, even for that, I taken a small initiative of gathering like-minded people in India itself, in Mumbai itself. Yeah. You know, on an initial level, we had a couple of meetings, and we are still discussing to see how to make the pathway for each and every one of us to grow together. So देख रहे हो विनील जी कैसे हम बढ़ सकते हैं? You are there, Sahil is there, Aditya was there, and सब लोग अगर proactively सब लोग अगर अपना thoughts present करेंगे तो शायद जल्दी अपन बना सकते हैं. And in fact we've got a very fantastic medium to spread this. Niranjan is doing a fantastic job. He's a fantastic breeder himself. He's got that potential. Yeah. So of course he's being exploited a lot, but that's okay. That's his choice. So I would say thanks Niranjan actually to creating a platform wherein आज ही ऐसा हुआ कि Niranjan was here and I got a client, a walk-in client. So they were talking to me, and all of a sudden they saw Niranjan. बोलते अरे आप निरंजन सर हो? हाँ मैं डिस्कस निंजा था. So बोलते आपका वीडियो देख के तो हम अनिल सर के यहाँ पहुंचे. So it was like wow. It was actually a wow factor. Same. The feeling is mutual. मैं भी हमेशा credit निरंजन को देता हूँ. Because of him, I got like national level recognition. तो मैं तो बस अपना छोटा मोटा ब्रीड करता था, बेचता था, but निरंजन के कनेक्ट हो पाया पूरा. ठीक है, निरंजन से इसके हमारे वजह से वो it was a mutual thing, and both have grown because of each other. And I feel that's how we would require, that's the mindset of people we would require to actually take us together on an international level. This is what I feel. तो ये एक mutual idea के साथ ही हमको आना पड़ेगा. And of course हमारा trade अपने जगह पे रहेगा, but then when it comes to present ourselves internationally, it should be as Indian discus. Indian first, yeah. Indian discus. चाहे club लगाओ, association लगाओ, या कुछ भी लगाओ, but it should be Indian discus breeders or hobbyists or traders or whatever, that we are presenting ourselves to India, to the international market. Globally. Yeah. And one personal question, like
आपने पहले से ही सोच के रखा था क्या मैं डिस्कस में ट्रेड करूंगा, या सिर्फ हॉबी तक ही था, या अपने आप ट्रेड में घुस गए, आपको पता ही नहीं चला? कैसा था ये ये ट्रांजिशन? पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के बैठा हूँ। आई मीन my education, I've done my education in automobiles. I've got hands-on experience on automobiles. Then came a time when I had to wanted a white collar job, so went into corporate. And my last position was as a associate director for one of my companies, leading the commercial transaction advisory team for India. So that's my journey. And then one fine day ऐसा होता है कि ठीक है, it's okay. So Now follow the passion. So अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा किया जॉब छोड़ के, या कैसा है? हाँ, जब पैसे आते तो अच्छा लगता है, जब पैसे नहीं आते तो ऐसा लगता है। बट वो एक सेटिस्फेक्शन है ना, हॉबी भी कर रहा हुआ है। मेरे पास अभी कैसा है ना कि घर जाता हूँ ना, एवरी मॉर्निंग आई एम मोटिवेटेड टू कम एंड सी माय फिशेस। करेक्ट, correct. Irrespective I do the business or no, but I am motivated to come and see my. I never in a day or in the entire time of my discuss have I ever felt that I've been forced to go there. Correct. मेरे काम के टाइम पे होता था। मोस्ट ऑफ द हॉबिस्ट का वही है। मैं भी मेरा प्रोफेशन अलग था। लाइक आई डिड इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, आई डिड MBA इन फाइनेंस, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट। देन सडनली बिजनेस था मेरा, थोड़ा ब्लड में था। मैं पहले रेस्टोरेंट ओन करता था, बट देन ऐसा हुआ कि डिस्कस से अगर पैसा भी आ रहा है, खुशी भी मिल रहा है, टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो क्या बुरा है? एंड देन इवन आई शिफ्टेड फ्रॉम लाइक जॉब टू बिजनेस इन डिस्कस। मतलब मेरा कभी इंटेंशन नहीं था ऐसा बिजनेस करना, हाँ, बट वो हो गया सब। एज यू राइटली सेड, इंटेंशनली तो मैं भी नहीं था यहाँ पे। आई मीन देयर वाज नो इंटेंशन के, मुझे नहीं पता था कि यार वो बोलते हैं ना, धंधा पानी में, हमारा धंधा पूरा पानी में है। करेक्ट, पूरा धंधा पानी में है। और वो पानी वाला धंधा इतना सेटिस्फेक्शन देता है कि रोज सुबह बिना किसी के पुश के या बिना किसी के मोटिवेशन से टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे। करेक्ट। और एक राउंड मार लिया तो फिर लाइक इट इज सेटिस्फाइड। दिन पूरा हो गया हमारा, कब दिन खत्म होता पता नहीं चलता, राउंड ही मारते रहते हैं। एंड देन इट्स टाइम टू गो होम। पता नहीं चलता, एग्जैक्टली टाइम का पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता। एंड देन आई मीन डिस्कस इज समथिंग, डिस्कस इज डिस्कस। आई मीन इट्स अभी डिस्कस आ गया, अभी दूसरा कोई मच्छी का नहीं सोचे अब। दूसरा कोई मच्छी अभी आपको पता है कि आइटम्स आई लाइक वाइट स्टेन। I am focused on Discus and Ultim Angels as of now. Of course, मेरे friend है गोवा में, Okay. so we had jointly started the stingrays, Okay. and now he's successfully breeding Stingrays. stingrays. Okay. Yeah, I mean partnerships have never given me a good experience. एक दो partnerships किया हूँ, they've got their own reasons. So बस अभी ये है कि किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, किसी के साथ स्टिंगरेज भी आने वाले हैं इधर Aquadiskus? स्टिंगरेज आके गए Aquadiskus में। Aquadiskus में जब टाइम आता तब स्टिंगरेज भी आ जाते हैं। तो अभी है एज ऑफ नाउ नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। Okay. बिकॉज स्टिंगरेज का स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। करेक्ट। Are they banned? Are they okay to keep? Are they officially okay to keep? Okay. At least in Mumbai, I don't know. Louis has like, he's got all the needed required permissions and registrations for the stingray. उनका एक वीडियो भी था शायद YouTube पे। हाँ, वो Lush Aqua में था उसका एक वीडियो। So yeah, and crazy people. एक ये क्वेश्चन है कि अभी आपका मैं देखता हूँ सब मच्छी IP है। हाँ जी। मोस्ट ऑफ देम एक हाथ दूसरा छोड़ के रहेगा, बट वाई IP? आप IP पे आके ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत साल से रुक गए। पहले आप अलग अलग फार्म से लेके आते थे। यस। एंड अचानक, जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, तभी मैं हॉबीज था। हाँ। तभी आपका अलग अलग फार्म से आते थे मच्छी, एंड नो डाउट एवरीथिंग वाज गुड ओनली फॉर मी तभी देखे। बट अभी IP में आके आप ऐसा लग रहा है कि IP ही आप सोच रहे फ्यूचर भी है, तो वाई IP? लाइक क्या है IP में इतना? तो वापस मैं वही बोलूंगा कि मैंने जब मेरा हॉबी स्टार्ट किया ना, प्रॉब्ली आई वाज द मोस्ट लकी पर्सन टू स्टार्ट विद द बेस्ट इन इंडिया, एटलीस्ट दैट टाइम। करेक्ट। सो वो एक स्टैंडर्ड बन गया है मेरा कि अगर हॉबी करना है तो अच्छे से करो। भले आप 10 रुपए की हॉबी करो, 10,000 की हॉबी करो, लाख रुपए की हॉबी करो, बट देन डू इट विद द बेस्ट। Get what you get best in 10 rupees or 10,000 rupees or a lakh of rupees is what I feel. So because hobby is something that
अगर जहां से आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज हो या स्पेशली पेट्स एंड लाइफ स्टॉक का होगा तो जहां से भी आप चालू करते हो इफ देयर इज अ मोर्टेलिटी यू might tend to lose your hobby, which is not right. डिमोटिवेट होते हैं काफी, डिमोटिवेट हो जाते हैं इंसान और बोलेगा यार वेस्ट ऑफ मनी हो गया. ये फीलिंग मैंने ले लिया हूँ. आई मीन आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अभी जैसे अगर आप ऑफ कोर्स आपका भी ऐसा होगा कि पैसा थोड़ा जमा किया और उससे मच्छी लेके आए हमने, करेक्ट, ठीक है, एंड इफ दैट गोज डाउन द ड्रेन, घर से मिलती है वो अलग बात है, बट अपना भी ऐसे दिल टूटता है कि यार इतने बेकार में इतना पैसा डाला एंड देन अगेन. और वही अगर इफ आई कैन डू दैट टू सपोर्ट दैट कि अगर अपन कुछ बेचे तो एकदम क्वालिटी का बेचे, वैल्यू फॉर मनी दे लोगों को, आई फील आई एम अगेन हैप्पी डूइंग फॉलोइंग माय पैशन एंड डूइंग द राइट थिंग. एंड एक क्वेश्चन, अभी क्वालिटी की बात है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ क्वालिटी मतलब सिर्फ मच्छी अच्छा दिखना इज क्वालिटी, या वो इम्यून है काफी बीमारियों से दैट इज क्वालिटी, या मच्छी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है दैट इज क्वालिटी? क्वालिटी का क्या है, पैरामीटर्स क्या है, हाउ डू यू डिफाइन क्वालिटी? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जन 3 इंच के मच्छी को बोल देते बहुत अच्छा क्वालिटी है, नो डाउट अप टू सम एक्सटेंट, बट जब तक वो बड़ा होता है दैट टाइम यू नो एग्जैक्टली कि हाँ ये एक्चुअल में बहुत अच्छा क्वालिटी है. क्योंकि मैं खुद रेस करता हूँ, कुछ मच्छी फुल पोटेंशियल पहुंचता ही नहीं कभी, बट मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है बहुत अच्छा, बट देन बाद में जाकर डिसअपॉइंटमेंट मिलता है कि अरे ये मेरा फेवरेट फिश था और ये ग्रो ही नहीं किया, या 4 इंच ही हुआ, 4.5 इंच हुआ. तो आपके हिसाब से क्वालिटी क्या है? अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपको ऐसा लगा कि उसमें पोटेंशियल है और वो ग्रो होगा एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं होता तो यू गेट डिसअपॉइंटेड, बट यू नो द रीजंस व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग. देयर आर मेनी रीजंस, सम कम फ्रॉम द जेनेटिक साइड, some from our side. Now one batch का fish है, of course you would agree with me. एक सेट ऑफ पेरेंट्स, ह्यूमंस में भी एक सेट ऑफ पेरेंट्स के 5 बच्चे होंगे, पांचों सेम नहीं होंगे. Some would be brilliant, some would be good, some would be okay, some would be not so good, and some would be poor. That is fine. That's a livestock. You don't know who, what, when. बच्चों में भी ऐसा होता है कि किसी को अच्छा कंपनी मिल गया तो निकल गया, किसी को बुरा कंपनी में मिला तो लटक गया. मच्छियों में पर से इफ आई वुड वांट टू से दैट अगर एक बैच हमारे पास समझो से सपोजिंग मेरे टाइम में भी ये मच्छी एकदम परफेक्ट है हेल्थ वाइज, अगर मैं बोलूं तो आई वुड से ठीक है. आई इफ यू आस्क मी पर्सनली हाउ डू यू सेलेक्ट द फिशेस, आई वुड नॉट सी द पैटर्न्स और आई वुड नॉट सी द कलर, आई वुड सी द शेप, आई वुड सी द हेल्थ. And somewhat over the years थोड़ा बहुत तो ये समझ आ गया है कि ये मच्छी हेल्दी है अच्छा, नहीं है, वो प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आप देख के पता चलता, समझ जाते हैं. काफी लोग जैसे बोलते हैं ना कि all that glitters is gold. हाँ, सबसे डार्क फिश है वो लेने का टैंक में से, that is wrong. That is wrong. You would also agree कि डार्क फिश क्यों होगा डार्क, या तो फिर एक लॉट में एक फिश सबसे बड़ा क्यों है, एक लॉट में एक फिश सबसे छोटा क्यों है. अब हमारे यहाँ पे एक बेसिक फ्लो है कि मेरे पास यहाँ पे 3 साइज में फिशेज है, एक ही लॉट के 3 साइज में फिशेज है. मेरा बजट है से 1000 रुपीज, जो बेच रहा है वो मच्छी उसका बजट है 3000 रुपीज. बट वो मैं ऑब्वियसली ये पूछूंगा मेरे को छोटा वाला भी मच्छी दो, लेकिन मेरा 1000 रुपये, अरे वो मच्छी छोटी क्यों रह गई है. हाँ, ये किसी ने किसको क्वेश्चन नहीं किया. करेक्ट. बट मेरा पॉकेट बोलता है कि मैं 1000 रुपए की मच्छी लेनी चाहिए, तो मैं 1000 रुपए की मच्छी लूंगा, इरिस्पेक्टिव कि आगे जाके बड़ी होगी नहीं होगी, 4 दिन में मेरे पास मर जाएगी. ठीक है, तो अभी ये चीज को एडुकेट नहीं करता, अवेयरनेस नहीं है, कोई एडुकेट नहीं करता कि वो मच्छी वो बैच में छोटी क्यों है. There are so many reasons why the fish is small. Probably it is genetically weak, the poor child. ठीक है, probably it's been bullied by the entire batch and it's not got to eat. That is why it's not grown. Probably उसके कैसे वो मंद बुद्धि वाला बच्चा है कि भाई बड़ा ही नहीं होएगा. तो ऐसे काफी फैक्टर्स है. But then it's an indicator, I would say, कि अगर एक लॉट में 10 मच्छी बढ़ रहे हैं लेकिन 2 नहीं बढ़ रहे तो it will come with experience only ना. It will come with experience only. So हॉबीज लोगों को ये रहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस रहना चाहिए कि बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो लेट्स
hear him out, evaluate, and then go ahead. Yeah. Because ultimately, what I'll do is, I as a hobbyist, if I go and I pick up the smallest fish, saying that my budget is $1,000, and I take that fish and it dies in 2 days, Vineel Thala chore hai. Sorry, I'm using profanity, but this is how it is. This is how it is. So, मेरा एक थॉट प्रोसेस ये है कि 10 आदमी को समझाने से अच्छा है ना कि एक प्राइस रखो, एक टाइप की मच्छी रखो, ठीक है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट द क्वालिटी इज गुड. ऐसा नहीं है कि क्वालिटी आईपीएम में खराब नहीं आती, हो सकता है वेरियस रीजन, मच्छी नहीं बड़ी, कुछ फार्म से सिलेक्शन में गलत आ गई, कुछ हमारे अपकीप में गलत हो गई, इट हैपेंस, होता है, करेक्ट. नोबडी इज गॉड, इवन गॉड हैज some God has created something with flaws. Okay, I'm not challenging God though. तो वो 19 में लेने को रेडी हूँ, because I know that if I'm charging you the highest in the market, I should give the products worth, your money's worth, and that's why I do that. अभी मैं बहुत relaxed हूँ कि I'm not competing with anybody, correct? Because I know what I'm selling. I have no arguments with people who charge less. Okay, I know Anil, one last question, like, where do you see India with respect to Discus in next 5 years, and what are the steps like we should go, what direction we should go in to achieve that target in next 5 years? Your question actually reminded me of my corporate days when I used to take the final round of interviews. It was a very standard question everybody used to ask. Where do you see yourself in our company in the next 5 years? So obviously we are having a good chat in the sense like you had some questions and probably commonly people had that questions. So we just had a chat, and to address that, I would say we are blessed, as you said, rightly said, that in Mumbai we are blessed by God to give us a quality water. So we don't have to change the water chemistry to get our fishes to breed and raise. At the same time, a lot of pockets in India have the same kind of water, or probably a little lesser, but then they've got good kind of water. Again, in my last visit to Indonesia for the Congress, the World Discus Congress, where we formed the World Discus Association. After the event, we had a dinner, and everybody who was there, probably from Australia, probably from China, from Indonesia, from Malaysia, Singapore, people were there, and we were discussing like how it happens in your country, and then the question came to India. We've seen a lot of through social media, we've seen a lot of good discus coming up. So do you all breed them, or do you all import them and then display, or do you all actually import at a smaller size? And so what I felt and what I feel that I could say is that yes, we've got maybe 60% of our stocks coming from our own breeders, which have got that kind of international potential, and 40% is from the imports. Now, even in that 40% would be like traders or importers who are getting and raising the fishes, not the ones that are already raised to a certain quality. Probably 2 or 3% of our total discus production would be from there. So since they asked me that question, I said that I would wish to invite you all to India, probably the end of the year, to select some good quality discus for your own country. And I did get a few nods, and people were excited that we would also like to buy discus. So that's what when I came back, I met a few of us, and we are on the same platform working towards it. We've got a good 6 months to actually invite them back. Correct. So our way forward would be we come together as a team. We specially grow a few batches to meet the international standard. Correct. And sell them at an international price is what I feel. It's a growth to all together, and I guess that's how we should do it. Yeah, definitely. And maybe like you've got a good breeding skill, I've got a good raising skill, and probably Niranjan per se has got a good selling skill. We all three can. So people like us can come together and do the wonder. Correct. I feel everybody benefits out of that. Correct. So that's how I see it. When you're saying 5 years down the line, if we follow certain ethical principles and come together for the common cause,
I guess 5 years down the line, we can take the tag of Mecca of Discus towards India. And so did mention that y'all come together and do it in last year. Last year, correct. It wouldn't be too late that soon India would be the Mecca of Discus. Correct. We can do that. I believe. Yes, I can take this opportunity to again give a common call to all those who would be interested in joining for this cause, this intention of taking Indian discus to an international level. Can reach out on this video itself. Correct. Just put in a comment. Probably we'll see how we can work together. Correct. We'll connect. You can connect with Vineel. Of course, Niranjan would put the contact. You can connect with me, Anil, and let's see how we can take this forward. Definitely. So, if not by the end of this year, probably the first quarter of next year, we could target to have some buyers come here, select some plan of action. Yes, correct. Let's do that. Okay, Anil bhai, thanks a lot. बहुत अच्छा chat था. It was pleasure talking to you. बहुत कुछ सीखने मिला. बहुत सैचुरेट हो गया एक्चुअली. बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो गया. शायद सब्सक्राइबर्स के लिए भी अच्छा है. एंड वो लोग एक अभी एक क्लियर विजन के साथ डिस्कस पे फोकस कर सकते हैं. Of course. And yes, it was a fantastic chat. शायद मैं इतना बात तो कभी किया नहीं हूँ, but then I spoke my heart out. And yes, I would want whoever is in the hobby to follow the hobby, and whoever is in the trade to follow some kind of passion, so that everybody grows together. And on that note, for a change, I would like to say goodbye and thank you so much, Vineel, for being here. Thank you, Niranjan, for being here. Thank you, the backend team. I can name you all if you all want, but I guess you all are always there. So yeah, we have a good team up for ourselves. We take this forward, and let's see where we can collectively grow as Indian Discus Club or Discus Club of India. Sure. And yeah, goodbye. Bye. Bye. I see you struggle like butterflies in water, can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I would walk on glass, I would run